Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear listeners, viewers, and students. This is Nadia Malik with today's lecture. Welcome to NM Language Academy. In today's lecture, we are going to discuss the language of film. And this topic is a part of your course, Emerging Forms of Literature. And this is part 1 regarding the language of film. First, we see the brief history of film. The first audience to experience a moving film did so in 1895. The film by the Lumiere brothers was called Workers Leaving the Lumiere Factory, 1895. Their film, Train Entering the Gare de Ciotat, 1895, caused people to faint with fear as the train loomed from the screen into the theater auditorium. फर्स्ट जो फिल्म थी जिसका एक्सपीरियंस किया गया था वो 1895 में किया गया था और ये फिल्म प्रेजेंटेड की गई थी लूमियर ब्रदर्स की हेल्प से। सबसे पहले इसमें क्या चीज़ दिखाई गई थी ऑडियंस को कि एक जो ट्रेन है वो एंटर हो रही है और जब ये सीन उस टाइम ऑडियंस ने इसको देखा, वॉच किया, तो उन्हें लगा कि जैसे ट्रेन जो है वो थिएटर की स्क्रीन से सीधा ऑडिटोरियम में एंटर हो जाएगी और इस खौफ की वजह से ऑडियंस जो है वो फैंट हो गई, यानी सेंसलेस हो गई, बेहोश हो गई। क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था फिल्म का, तो लोग जो है वो खौफज़दा हो गए। These films did not carry a story or narrative. They merely showed a moving image on the screen. चूँकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्क्रीन पे एक मूविंग पिक्चर दिखाने का, तो इसमें कोई स्टोरी नहीं थी, कुछ नैरेटिव नहीं था, ये सिर्फ एक मूविंग इमेज था दैट वाज शोन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द स्क्रीन। नाउ वी सी what is film or the definition of film. Movies, also known as films, are a type of visual communication which use moving pictures and sound to tell stories or inform or to help people to learn. तो जो मूविंग पिक्चर्स होती हैं और उसके साथ आप साउंड भी सुन रहे होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? फिल्म या फिर मूवी का नाम देते हैं। टाइप्स ऑफ फिल्म: नैरेटिव फिल्म्स, नॉन फिक्शन फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, एनिमेटेड फिल्म, एक्सपेरिमेंटल फिल्म। फॉर्म ऑफ फिल्म: A movie is highly organized and deliberately assembled and sculpted by a filmmaker, and various elements are included. फिल्म जो है उसको फिल्म मेकर से बनाया जाता है और उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ एलिमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। mise en scene, sound, editing, narrative. So what is mise en scene? Mise en scene means the organization or arrangements of different characters or actors, or the arrangements of scene on the theater screen. तो माइज एंड सीन से मुराद क्या होता है कि ये एक अरेंजमेंट्स के लिए यूज़ होता है कि कैरेक्टर्स जो हैं, जो एक्टर्स हैं, वो किस तरह से उनका सीक्वेंस होगा फिल्म में जो कि प्रेजेंटेड की जा रही है स्क्रीन पर या थिएटर पर,
तो उनका सीक्वेंस क्या होगा और कौन से सीन के बाद दूसरा या नेक्स्ट सीन कौन सा प्ले होगा, तो इसको क्या कहा जाता है? माइजन सीन। साउंड एडिटिंग और नैरेटिव एलिमेंट्स ऑफ फिल्म। इसमें हमारे पास दो किस्म के एलिमेंट्स हैं। वन आर कॉल्ड नैरेटिव एलिमेंट्स and the others are called stylistic elements. Narrative elements: first is plot, second characters, third setting, fourth point of view, and fifth metaphor. अब plot क्या है? Plot the series of event, how they are constructed one by one. कि जो आपको फिल्म दिखाई जा रही है उसमें जो सीरीज़ है इवेंट या इंसिडेंट का, उसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है। कैरेक्टर जो कि एक्टर्स हैं जो प्ले कर रहे हैं, जो डिफरेंट रोल्स को प्ले कर रहे हैं, सेटिंग किस तरह की है, बैकग्राउंड क्या है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू उसमें शेयर किया गया है, क्या कॉन्सेप्ट है। मेटाफोर, उसमें सिमिली क्या यूज़ की गई है। Stylistic elements: mise-en scene, cinematography, editing, sound. mise-en scene जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। cinematography का मतलब होता है the art or science of presenting a picture in moving form. जब आप किसी फ़ोटो को या फिर पिक्चर को मूविंग फॉर्म में दिखाते हैं, मोशन फॉर्म में दिखाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? साइनेमेटोग्राफी। नाउ वी सी द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा। तो इसका जो वर्ड है सिनेमा का, इसको पहले जो है वो प्रोनाउंस किया जाता था सिनेमा। नेक्स्ट इसका प्रोनाउंसिएशन CNM, ये भी इसका प्रोनाउंसिएशन था। ब्रिटिश में इसको जस्ट माँ प्रोनाउंस किया जाता था, CN माँ। और इसको सिनेमा का जो है वो नाउन के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसकी जो एटिमोलॉजी है, ओरिजिन है, शॉर्ट फॉर साइनेमेटोग्राफी के लिए यूज़ होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया है, मोशन पिक्चर जिस पे हम देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सिनेमा कहते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे मोशन पिक्चर। यूजुअली यूज्ड एट्रीब्यूटिवली अ मोशन पिक्चर theatre, movies, especially the film industry, the art or technique of making motion pictures. Cinema is an art from that came into being because of technological advances. The transition from still photography came in the late 1800 with series photography and the invention of celluloid strip film. अब ये जो सिनेमा है इसकी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? 1800 में शुरू हुई थी। This allowed successive still photos of a moving subject to be captured on a strip of film, advancing through a single camera. Language of cinema: the accepted systems, methods, or conventions by which the movies communicate with the viewer. Conventions are flexible. For example, dissolves. Viewers identify with the camera's lens. Cinematic conventions and individual experiences shape the reality depicted by film. तो जो सिनेमा की लैंग्वेज होती है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द कन्वेंशंस ऑफ दैट सोसाइटी आर सिस्टम.
that is used to communicate to the viewer the message for which that film was made. The cinema is a language. The cinema is infinitely different than verbal language. Film is too obviously a message for one not to assume that it is coded. Includes partially coded elements, elements of continuity editing, convention conventional to a degree in organization of narrative space and time. But is there a pre established film syntax? No, it is learned, established historically as an aesthetic norm. Understanding and applying film language is key to your students' success on this course. Give them plenty of time to apply their knowledge through analyzing clips as a class or in group, but also consider individual presentations if you have confident students. Putting their knowledge into practice also reinforce learning and give you an opportunity to start them on some coursework. Make some film clips of your own. कि जो फिल्म के क्लिप्स दिखाए जाते हैं टू अंडरस्टैंड करने के लिए फिल्म की लैंग्वेज को और उसको एनालाइज करने के लिए ये स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होते हैं इस कोर्स को समझने के लिए कि व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिल्म आर सिनेमा। तो ये कोर्स उस वक्त तक समझ नहीं आ सकता जब तक कि आप किसी भी फिल्म के क्लिप नहीं देखते और अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते कि व्हाट लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन दिस फिल्म। नेक्स्ट इज़ मोटिव कि इसका मोटिव क्या है। हियर स्टूडेंट्स विल लर्न द बेसिक टूल्स ऑफ analysis that they will need in the exam. In coursework and learn the language they should get used to using whenever they talk about films. Through the analysis of clips and discussing each other's film viewing, aspects of industry can also be introduced. तो जब स्टूडेंट्स आपस में अपने क्लासमेट्स के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इन क्लिप्स को देखेंगे और उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और ज़ाहिर सी बात है हर स्टूडेंट का जो कॉन्सेप्ट होगा एनालिसिस करने का व्यू होगा वो डिफरेंट होगा। तो जब शेयरिंग होगी तो डेफिनेटली उनमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। नॉन हॉलीवुड फिल्म्स कुड बी यूज्ड टू analysis micro aspects, a gentle introduction to different kinds of films. Watching film clips means you are not really working, doesn't it? कि सिर्फ आपने क्लिप नहीं देखने हैं बल्कि उसको आपने एनालाइज करना है उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। जस्ट क्लिप जो है अगर आप हॉलीवुड की फिल्मों के क्लिप देख लेते हैं तो दिस इज़ नॉट sufficient. Okay, dear listeners and viewers, this was your part 1 regarding the language of film. Inshallah, we will see in the next lecture in part 2. Till then, Allah Hafiz.